हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंचला। आज के अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मॉड्यूल 5th से रिलेटेड हैं। इससे पहली वीडियो में भी हम मॉड्यूल 5th से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मैं फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, optical fiber is made of, and you know that basically optical fiber is made of glass or plastic pipe, that is dielectric material. So option C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Geometrical structure of fiber is made of. The optical fiber has three principal sections: the core, cladding and jacket. So option D is the correct answer because core, cladding and jacket सभी ऑप्टिकल फाइबर के सेक्शन है, तो D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, when an optical signal or pulse is sent into fiber, the pulse is spread or broaden as it propagates through the fiber. This phenomenon is known as. So, as we know that the term dispersion is used to describe pulse broadening effect in fiber. So, dispersion is the right answer. So, option B is the correct answer. Next question की तरफ चलते हैं। Which kind of dispersion does not exist in single mode fiber? In as the different types of dispersion: modal dispersion, material dispersion, waveguide dispersion and modal dispersion, जिसको हम intermodal के नाम से भी जानते हैं, intermodal और modal dispersion. Inter means in between what? Modes. So different modes के कारण जो dispersion होता है उसे intermodal या modal dispersion कहते हैं. And modal dispersion is the dominant source of dispersion in multimode fiber. And modal dispersion does not exist in single mode fiber. So option A, modal dispersion is the right answer. Next question की तरफ चलते हैं। Question number 5, loss of power during transmission through optical fiber is. So loss of power during transmission through optical fiber is known as a attenuation. So option A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। attenuation in fiber optics is due to. So, attenuation in optical fiber is due to absorption, scattering and bending losses. So यहाँ पर हम ऑप्शन देखें। फर्स्ट ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉसेस, ये सारे ही कारण होते हैं अटेन्यूएशन के। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Attenuation in fiber of length L kilometer is where Pi is the input power and Po is the output power. ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द बेस ऑफ फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ अटेन्यूएशन इज -10/L log base 10 Po upon Pi, where Po is the output power, Pi is the input power and L is the length of fiber. So option A is the correct answer. Next question देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if we increase the numerical aperture of a fiber then the number of modes will be. So जैसे कि आप जानते हैं कि the formula of V number is V equal to 2 pi a upon lambda under root mu1 square minus mu2 square. And this quantity under root mu1 square minus mu2 square, this is equal to numerical aperture, and the number of modes n equal to v square upon 2. From this formula the v number is directly proportional to numerical aperture. If numerical aperture increases then v also increases, and v increases, so it means number of modes increases. So if we increase the numerical aperture of a fiber then the number of modes will be increased. So option A is the right answer. Next question की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the loss of power
by optical signals through the optical fiber is mainly due to. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए रेले स्कैटरिंग, ऑप्शन बी रमन स्कैटरिंग, ऑप्शन सी विन्स स्कैटरिंग एंड डी ऑल ऑफ these. So Rayleigh scattering is mainly due to the loss. Sorry, in Rayleigh scattering is the main reason. So option A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लॉस ऑफ लाइट इंटेंसिटी इन ऑप्टिकल फाइबर इज. सो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर दैट इज लॉस इन पावर इज ड्यू टू absorption, scattering and bending. So scattering and absorption is the right answer. So option D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Which kind of dispersion is caused by the difference in propagation time of light rays that take different path down a fiber? So option देखते हैं. Option A modal dispersion. Modal dispersion is a major source of dispersion in multimode fiber and does not exist in a single mode fiber. When more than one mode propagates through a fiber, then intermodal dispersion occurs. Since many modes are propagating, they will have different time to propagate through the fiber. So, modal dispersion is the right answer. So, option A is correct answer. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं. वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंटरमोडल डिस्पर्सन. सो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया इंटरमोडल डिस्पर्सन को ही हम मॉडल डिस्पर्सन कहते हैं एंड मॉडल डिस्पर्सन इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर. सो तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं. ऑप्शन ए एब्सेंट इन सिंगल मोड एंड कंसिडरेबल इन मल्टी मोड फाइबर. दिस इज द राइट आंसर. लो इन बोथ single mode multi mode fiber? No. High in both single mode and multi mode fiber? No. High in single mode and low in multi mode fiber? No. तो option A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. डिस्पर्सन इज मैक्सिमम इन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्शन देखते हैं. सिंगल मोड फाइबर, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ सिंगल मोड फाइबर इंटरमोडल डिस्पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट and the graded index fiber is made to overcome the modal dispersion, and the modal dispersion is a major source of dispersion in multimode step index fiber. So dispersion is maximum in case of multimode step index fiber. So option C is the right answer. Okay, next question देखते हैं. Question number 14. Telephone signals are sent through optical fiber in the form of, and we know that an optical fiber is used to transmit light signal and it is essentially a light transmitting medium. So visible or infrared light is the right answer. So option C is the correct answer. Next question पर चलते हैं. Question number 15. Which of the following is not a metallic impurities found in glass in extrinsic absorption? So as we know that the presence of metallic impurities in the fiber material is a major source of extrinsic absorption loss in fiber. But Si is not a metallic impurities. So option D is the right answer. Next question देखते हैं. Question number 16. The effect of intrinsic absorption can be minimized by. Intrinsic absorption is a natural property of glass itself. So this effect can be minimized by choice of suitable core and cladding component. So option C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं. Absorption losses due to atomic effects mainly include. Okay, atomic defects जो होता है is also in atomic defects in fiber material also responsible for the loss of light energy, and the atomic defects include such as missing molecules and oxygen defects. So option C missing molecules and oxygen defects in glass is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.